Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, Professor A. Giratkar, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we learn Unit 5, Advanced Surveying Equipment, and topic is 5.4 and 5.5. In last lecture, means in topic 5.2.2 and 5.3 we have studied introduction to total station, construction of total station, application and uses of total station, components parts of total station, and temporary adjustment of total station. Now, after completion of this video lecture, student will be able to CO prepare plans using total station instrument, and LOR explain the procedure to measure the horizontal and vertical angles between the given lines using total station instrument, and describe the procedure to measure distance and coordinates of the given points to prepare plans using total station instrument. And PO map are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10. Now, use of function keys of total station. Dear students, this is the image of total station. While taking reading, this side is in front of the observer. Means this is the eyepiece side and this is the display. So this display having some functions key means F1, F2, F3 and F4, and this is the numerical keys. By using these keys we can operate the total station. While completing the temporary adjustment of total station by using function key we can measure the horizontal angle, vertical angle, horizontal distance one by one. As for example, जैसे कि vertical function keys use for total station, अगर horizontal angle अपने को measure करना है तो इस टाइप का विंडोज अपने को दिखाई देगा. एंड V angle means vertical angle, H angle means horizontal angle. हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब अपन मेजर करेंगे डिस्टेंस मेजरमेंट मोड में, तब हॉरिजेंटल एंगल अपने को दिखाई देगा इस टाइप से, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस आएगा और रिलेटिव एलिवेशन मींस हाइट आएगा. इस टाइप से अपने को विंडोज, दिस विंडो एंड दिस विंडो अपने को ये एंगल मोड में दिखाई देगा और ये हॉरिजेंटल मेजरमेंट में दिखाई देगा. सो डिस्प्लेज में the display uses a dot matrix LCD. In general, the upper three lines display measured data and the bottom line displays the soft key function which changes with the measuring mode. Okay. Now display marks देखिए इस टाइप से डिस्प्ले रहेगा. जैसे कि V अगर लिखा है तो कंटेंट क्या रहेगा, V एंगल. HR लिखा है तो H एंगल राइट मींस हॉरिजॉन्टल एंगल राइट, HL मींस हॉरिजॉन्टल एंगल लेफ्ट, SD मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, VD मींस रिलेटिव एलिवेशन, SD means slope distance, N means N coordinate, E means E coordinate, Z means Z coordinate, star means EDM working, and M means meter unit. As the short form, ये short form अपने को मालूम होना चाहिए, तब जाके अपन ये उसका मीनिंग है इस टाइप से अपने को समझना पड़ता है. ओके, बिकॉज देयर इज नो पॉसिबल टू गिव द कंप्लीट वर्ड. ओके, so display, this is the display F1, F2, F3 and F4. This is the function key
and these are the numerical keys. Okay, up down. Okay, सो डिस्प्ले मार्क्स कैसे रहते हैं देखिए, इस टाइप के अगर मार्क है तो कोऑर्डिनेट मींस की, इसका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मोड। ओके, कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मोड में अगर जाते हैं तो ये कीज अपने को प्रेस करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, देन दिस डिस्टेंस मींस की, दिस इज द डिस्टेंस मींस की, यहाँ पे दिया होगा, दिस इज द डिस्टेंस मींस की, मींस डिस्टेंस मेजरमेंट मोड। एएनजी एंगल मीन की, यहाँ पे दिया होगा एएनजी कहीं पे, है ना, एएनजी एंगल मेजरमेंट मोड। पावर, दिस इज द ऑन ऑफ पावर सोर्स। मेन्यू, मेन्यू की, यहाँ पे मेन्यू की वगैरह दिया होगा कहीं पे, ठीक है। सो मेन्यू की, स्विच मेन्यू मोड एंड नॉर्मल मोड टू सेट एप्लीकेशन मेजरमेंट एंड एडजस्ट इन द मेन्यू मोड। ओके, ESC means escape key, returning to the measurement mode or previous layer mode from the given mode. Okay, ENT means enter key, press at the end of inputting values, and F1 to F4, F1, F2, F3, F4 are the soft key, means function keys respond to the message displayed. Okay, now अगेन एंगल मेजरमेंट मोड। एंगल मेजरमेंट मोड में F1 displays zero set, means angle of horizontal is to set to 0 degree, 0 minute and 0 second. While pressing F2 is used for hold the horizontal angle. F3 means H set, जो भी अपने को कोई एंगल अगर अपने को सेट करना है तो F3 sets a required horizontal angle by entering numbers or numericals, and F4 means P down arrow means the function of soft key is shown on next page, means P2 पेज पे जाने के लिए F4। again F4 tilt means setting tilt correction, if on the display shows tilt correction value. F2 REP means representation, repetition angle measurement mode, and F3 means V percentage means vertical angle percentage grade mode. Okay, then distance, horizontal distance mode, इसमें F1 means starting measuring, F2 mode sets a measuring mode, fine, coarse, tracking, F3 S by A select set audio mode, F4 next पेज जाने के लिए the function of soft keys it shows on next page. Again F1 offset, select offset measurement mode, F2 OS.O select stake out measurement mode, F3 M by F by I switches meter, feet or inches, and F4 next page means previous page जाने के लिए। Okay, so is the horizontal distance measurement. Then coordinate measurement, F1 means starting measuring, F2, okay, so these are the SA select audio mode. In this way RH set the prism height by put values, INSHT set an instrument height by input values, OCC set an instrument coordinate point by input values, P2 the function of soft key is shown on next page, P3 offset, select offset measurement mode, F3 जो भी यूनिट है वो सिलेक्ट करने के लिए, और F3 down arrow the function of soft key is shown on next page, P1. So in this way you by using the soft keys coordinate setting
So, summary of this lecture. We have studied use of function keys of total station, measurement of horizontal angle by total station, measurement of horizontal distance by total station, coordinate measurement by total station. Okay. Thank you very much. Okay.